गिरफ्तारी के विरोध में नक्सली संगठन नॉर्थ बिहार जोन कमेटी भारतीय वाम पार्टी माओवादी के द्वारा दिनांक 5/12/18 को नॉर्थ बिहार बंद का आह्वान करते हुए चंदा सराय एवं अन्य जगहों पर नक्सली पोस्टर छिपाया गया। प्राप्त सूचना का सन्हा नंबर 1600 दिनांक 1600 दर्ज कर सत्यापन अवसर कार्रवाई हेतु। इसका बहुत बढ़िया केस है, आपका रेगुलर बेल का केस है। हाँ, एक चीज ऐसा देखा जाए, सस्पिशन है कि आप जोनल कमेटी के माओवादी ग्रुप के जोनल कमेटी के आप मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर हैं, और जेल में बंद कुछ लोगों के इशारे पे आपने दहशत फैलाने के लिए बॉम्ब, हो सकता है गलत हो, आपकी एंटीसीडेंट भी नहीं है, वो मैंने देख लिया है, लेकिन अब इस एलिगेशन पे मैं डायरी भी मांगा गया हो, जो कोई स्पेसिफिक कहीं कुछ नहीं हुआ। हम स्टूडेंट हैं, वो कहाँ से कहते हैं स्टूडेंट? हम लिखे हैं हुजूर, और हम ये भी लिखे हैं कि आई हैव नो कनेक्शन विद दिस सच है। तो आपकी एंटीसीडेंट नहीं है, इसलिए आप ऑथराइज्ड नहीं है हुजूर। बहस कर सकते हैं स्थिति में कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, सेटेड मिल ऑर्डर। क्या डिग्री है, कहाँ से डिग्री है? डायरी में कुछ भी नहीं आया? डायरी में भी कुछ नहीं आया हमारे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। डायरी भी मांगा गया था अर्लियर बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट में लॉर्ड, तो हम डायरी में भी कोई हमारे अगेंस्ट में कुछ नहीं आया। जो द ओनली रिपीटेशन ऑफ द एफआईआर में लॉर्ड, नन हैज सीन द अकरेंस, नन इवन किसने मेरा नाम लिया, ये भी कहीं नहीं कुछ कह रहे हैं। तो इस तरह के केस में हुजूर अगर जेल चला जाएगा तो पूरा करियर स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए कोर्ट से भी अगर हमारे एक मिनट जैसा देख लीजिए, अगर कुछ नहीं होगा तो आई माइट कंसीडर। सारे जितने आपके जैसे नाम लिए हुए सब ने सरेंडर कर दिया, सब ने सरेंडर किया। लेकिन हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो लेकिन हमारे ऊपर कोई कहीं कुछ नहीं आया है। लेकिन अब क्या करें हम? सिमिलरली सिचुएटेड का रेगुलर बेल हुआ जी, रेगुलर बेल हुआ है, तो थोड़ा सा अंतर तो है हुजूर, लेकिन फेयर एंटीसीडेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए और कोई स्पेसिफिक कहीं नहीं आया। कौन स्टेट इसमें तो किस वजह से आप इनको माओवादी कह रहे हैं? तो रहना चाहिए। मेंबर ऑफ माओवादी है, स्टूडेंट है, सोशल सिक्योरिटी के। अरे सोशल सिक्योरिटी इसको बेल दिया जाए तो मान तो बढ़ेगा, इसलिए अपने ऐसे लोगों को बेल देना सोशल सिक्योरिटी के ख्याल से नहीं। ये कानूनी बहस तो नहीं है ना? नहीं, कुछ कानूनी नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ एथिक्स दोनों तो चलिए एंटीसिपेट देखना पड़ेगा, समाज के क्या असर पड़ता है। देखो ठीक है, कहीं एक नाम का जांच करते हैं, गुप्त सोर्स से पता किए कौन से आदमी ने कहा, कैसे संपर्क है, कुछ है ही नहीं, तो इनको क्या करेंगे बेल? डायरी तो हुई आई हुई है ना, डायरी में पूरा देख लिया, इतनी देर से मैं क्या कर रहा? डायरी नहीं तो अब तो डायरी देखा नहीं क्या देखिए सर, पिटीशन नहीं रहने पर हम बहुत मुश्किल। ठीक है। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार सिन्हा मिलर। Heard Mr. Satish Kumar Sinha, learned advocate for the petitioner, and Mr. Ramprasad Singh for the state. The petitioner seeks bail in anticipation of his arrest in connection with so-and-so. The accusation against the petitioner, and others is of exploding bomb in order to scare the civil society. The petitioner is alleged to be an active member of banned Maoist group. Land Council for the petitioner has submitted that though he has been named in the FIR, but his implication in this case is only on the basis of suspicion regarding his being member of the Maoist group. No source of information in this regard has been disclosed in the FIR or during the course of investigation. This court had called for the case diary on an earlier occasion. The case diary has since been received. There is no reference of any source by which the police came to learn that the petitioner was involved in the occurrence. On the contrary, Land Council for the petitioner has submitted that there is no case foisted against him, and he is a student who is making efforts to pass competitive examination for his livelihood. On the aforenoted ground,
he seeks anticipatory bail. Mr. Ramprasad Singh, learned counsel for the state, has however submitted that the petitioner has been named in the FIR and has been stated to have links with the Maoist group. He further submits that if such persons are granted anticipatory bail, it would only endanger social security. However, from the case diary, there does not appear to be any source which could lend credence to the aforesaid suspicion of the police that the petitioner is an active member of the MCC. There is no criminal case against the petitioner and he is a student. Considering this aspect of the matter, this court directs that in the event of the petitioner surrendering before the court below within a period of 6 weeks, he shall be released on bail on his furnishing bonds in the sum of ₹10,000 to sureties of like amount. However, the petitioner shall, while furnishing his bonds, give a separate undertaking that he shall not avoid the process of trial in case in the event of the case being committed to the court for trial. He shall not leave the territorial confines of the court where the case is pending without the prior approval of the court below. The petitioner shall get his presence marked before the officer in charge of the concerned police station on every Wednesday of each month. Any failure to carry out the aforesaid direction would render the bail granted to the petitioner liable to be cancelled. In the event of any breach of the aforesaid conditions, it would be open for the investigator to make an application before the court below make a suitable application for cancellation of bail of the petitioner, and in that circumstance the court below shall forthwith proceed in the matter. The petition stands disposed of with the aforesaid directions and observation.